Hello students, in this part we will study about the female reproductive system. Female reproductive system. In female there are different types of organs which help in reproduction, which combined and helps in reproduction. That makes the female reproductive system. In females, the different parts which collectively help in reproduction is called female reproductive system. Again, it's warning, you have always write in a fair notebook full form FRS. It is an abbreviation form. Always write full form in your notebook as well as in your exams. It contains it includes इसमें क्या कुछ होते हैं, a pair of ovary, fallopian tube भी बोलते हैं इसको, ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूटेरस, cervix and vagina. These are the different parts of the body which combined and help in reproduction. So these are called female reproductive system. It includes a pair of ovary, fallopian tube, uterus, cervix and vagina. We will discuss all about of these parts. Ovary. These are almond shaped. ये almond shaped बादाम के आकार की होती हैं. Each side ovary are present in abdominal cavity, each side of vertebral column. Ovaries present in abdominal cavity, below abdominal cavity, both sides. Every month after puberty, ovary releases an egg. This is called ovulation. You have to draw the diagram of female reproductive system also, because this type of question carry 5 marks, 3 marks theory and 2 marks for that.
ovary. One is left side and one is right side. This is the fallopian tube. Fallopian tube. It is also known as oviduct. This one is uterus. Cervix. Listen. Uterus contain 3 layers. Uterus की 3 लेयर होती है, आउटर पेरीमेटेरियम, बीच वाली मायोमेटेरियम, अंदर वाली एंडोमेटेरियम. ये जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोमेटेरियम. बीच में ये जो लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेटेरियम. एंड आउटर पेरीमेटेरियम. These are the 3 layers of इसके तीनों लेयर ये यूटेरस. ओवरी जो होती है, अब आपने पढ़ा जैसे ओवरी, each side ovary contains an element shape which every after the puberty every month ovary release an egg. This is called ovulation. अब एग रिलीज करने वाला कहाँ आ जाता है? जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग मूवमेंट, एग यहाँ पर मूवमेंट करता है. फैलोपियन ट्यूब के भी 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं. फर्स्ट इनफंडिबुलम, जो आगे पोर्शन ओवरी के जस्ट साथ में है, ये वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम. ऊपर ये जो पोर्शन यहाँ इसको बोलते हैं एम्पुला. एम्पुला. और लास्ट में ये पोर्शन क्या कहलाता है? इस्थेमस. Isthmus. These are the 3 regions of fallopian tube. Fertilization of egg always take place between the junction of ampulla and isthmus. Fertilization egg का जब भी होगा कहाँ होगा? जंक्शन इन दोनों के बीच में, isthmus और ampulla के बीच में जाकर के egg का fertilization, अदरवाइज कहीं fertilization नहीं होगा. तो नेक्स्ट fallopian tube.